Good morning, students. Yesterday we have completed the radius of the stationary orbit of an atom. Finally, we have got the equation. The radius of the nth orbit, rnth equals to, I have given the hint, नाही माझं पाय, नाही माझे pi, m square, s square, epsilon naught. I have told that how to remember the equation. That is nothing but nahi maze pi. To remember the equation easily. So, by seeing this equation, then what is the relation between the nth radius and orbital number, n square? So, h is constant, epsilon naught is constant, mass of the electron is constant, z that varies from atom to atom, then E square constant, pi constant. So, if I take the Rnth and n relation, hence, shall I write Rnth is directly proportional to n square, right? If I take the radius of the respective orbit, R1 is to R2 is to R3 is to dash dash is equals to 1 square, 2 square, 3 square. So, R1 is to R2 is to R3 dash dash is equals to 1 is to 4 is to 9 is to dash dash. So, therefore, R2 equals to 4R1 and R3 equals to 9R1. If I compare R1 and R2 with respect to 1 and 4, then R1 and R3 with respect to 1 and 9, R3 equals to 9R1, R2 equals to 4R1, R1 equals to 1. It means that the radius of the electrons in the atom are not equally spaced. The radius of the electrons in the atom is not equally spaced. अगर equally spaced रहे तो gap same रहता था. Now this is 4R1, 9R1. If you go for R4, 16R1, and R5, 25R1. Now this process goes on continue. It indicates that the radius of the orbit are not equally spaced. The electrons' orbits are not equally spaced from this equation. Is it clear? Yes. Then I go for first orbit and I consider hydrogen atom. So, निकाल देता हूँ for hydrogen atom, Z equals to 1, N equals to 1. Shall I write? R1 equals to N square, 1 H square, epsilon naught, M into 1 into E square, pi. This is nothing but epsilon naught H square divided by M E square pi. By substituting all the values epsilon naught, 8.854 into 10 to the power of minus 14, H equals to 6.625 into 10 to the power of minus 34 joule second, mass of the electron 9.1 into 10 to the power of minus 31 kc, charge of the electron 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb, pi 3.14. By substituting all these constant, then I come across 0.53 into 10 to the power of minus 10 meter. That is nothing but R1 equals to 0.53 angstrom. Now this radius is called Bohr's radius. We have considered the hydrogen atom. So Niels Bohr is conducted the experiment by using the hydrogen atom. So Z equals to 1, N equals to 1. This is called Bohr's radius. That is nothing but 0.53 angstrom. देख लो. If I go for
nth radius of hydrogen खाली put z equals to 1, then बचा क्या देखो, r nth equals to n square h square epsilon naught m z equals to 1 हो गया, e square pi. Shall I make it n square h square epsilon naught divided by m e square pi. एक बार इक्वेशन का आंसर कर लो. I consider the hydrogen atom for nth orbit. So I substitute only atomic number z equals to 1 for the hydrogen. There are n number of orbits, but the electrons are not available. For hydrogen, only one electron is existed, that is for first orbit only. If I consider n number of orbits in the hydrogen atom, then I keep n square as it is. This is nothing but rnth is equals to n square. Now this complete factor s square epsilon naught divided by m e square pi. Epsilon naught s square divided by m e square pi is nothing but 0.53 angstrom. This is nothing but R1. So I shall write n square into 0.53 angstrom. We can calculate the radius of hydrogen atom of nth orbit, that is n square into 0.53 angstrom. If I go for the second orbit, that is 2 square into 0.53 angstrom. Third orbit, 3 square into 0.53 angstrom. For nth orbit, n square into 0.53 angstrom. देख लो पूरे इक्वेशन. एक बार ग्लांस कर लो पूरे. Then I go for what? The next derivation. देख लो पूरा इक्वेशन सामने. कल करे सो डेरिवेशन है, उसी को थोड़ा एनालाइज करें सो, राइट. Shall I go for next? Then I go for next one, expression for orbital velocity of an electron. Orbital velocity of an electron. I need the orbital velocity. अब क्या करें? First derivation, that is nothing but the radius of the stationary orbit. Right? Then I want to calculate the expression for orbital velocity of an electron. So I go for same figure. कोई बदलाव नहीं है. I take the atom. Now this is the nucleus. Charge on the nucleus plus ZE. Now this is the radius of the electron, where it is going to be revolving with a velocity v having mass m. Same figure. Right? वही sentence लिखो. Consider an atom of atomic number Z and charge on the nucleus is plus Zi and E is the electron in the respective orbit of radius r moving with a velocity v having mass m. एक चार sentence लिखो. Then to keep the electron in a orbit, the necessary balancing condition, we know that the centripetal force is balanced by electrostatic force, that is nothing but me square by r is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught Zi into E divided by distance square r square. Shall I call equation number 1? When the electron is revolving around the nucleus with a velocity v having radius r, then there is a angular momentum, but angular momentum mvr is equals to an integral multiple of h divided by 2 pi. This is from Bohr's quantization rule. लिख सकते हैं Bohr's quantization rule.
मेरे को वेलोसिटी होना है, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे भी वेलोसिटी है। अगर स्क्वायर कर दिया ये कैंसिल हो जाता, आई डोंट वांट टू बी स्क्वायर इट, सिंपल हिंट। Bohr's quantization rule divided by balancing condition, that gives the expression for velocity of an electron. I call this is equation number 2. डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 by 2 तो करो और 2 by 1 करो, आपकी मर्जी, मेरे पास हिंट है। सो डिवाइड Bohr's quantization rule divided by balancing condition, we get the equation, the velocity of an electron in the orbit. So dividing equation 2 by 1, don't square it, 2 by 1, shall I write mvr nh divided by 2 pi, this is equation number 2, divided by me square by r, equation number 1, divided by 1 divided by 4 pi epsilon naught z into e divided by r square. अब अच्छी तरह से सॉल्व करो। So I go for mvr into r divided by mv square is equals to nh divided by 2 pi as it is रख दूँ मैं, इसको पूरा शिफ्ट कर दो ऊपर, राइट, इसको शिफ्ट करे 4 pi epsilon naught into r square divided by z square। एक बार देख लो पूरा, एक बार इक्वेशन को ग्लांस करो। क्या क्या कैंसिल हो जाते देखो, आर स्क्वायर यम यम, एक वी कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 by v, एन एच 2 pi 1 जा 2 pi 2 जा 2 एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर स्क्वायर गेट कैंसल्स, डिवाइडेड बाय 2 pi कैंसिल करे, सो यहाँ पे 2 रखे जेड स्क्वायर। अब इसको v इक्वल्स टू उल्टा कर दे तुम्हें, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2nh एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आवर इक्वेशन, राइट। फॉर nth ऑर्बिट, यहाँ पे ले ले तुम्हें, फॉर nth ऑर्बिट पुट v इक्वल्स टू vn, वहाँ पे n है ऑलरेडी, so vn equals to z square divided by 2nh epsilon naught, same equation. This is my equation for the orbital velocity of an electron for nth orbit. एक बार पूरा देख लो, कुछ भी नहीं कहा मैंने, हिंट क्या है, Bohr's quantization divided by balancing condition, that gives orbital velocity equation. इससे पहले क्या था, square of the Bohr's quantization rule divided by balancing condition gives the radius of an electron in the respect to orbit. पूरा एक बार glance करो, then I go for next analyzation. पूरा देख लो एक बार इक्वेशन, easy, कुछ भी नहीं है, unnecessary कॉम्प्लिकेशन बना लेते आप लोग बैठ करके, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या कंक्लूड कर सकते हैं इक्वेशन से, अब यहाँ पे इक्वेशन देख लिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन n एंड vnth, vnth इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, क्या हो जाता, एज n इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द रेस्पेक्ट टू ऑर्बिट डिक्रीजेस, इट मीन्स दैट the outermost orbital electrons are having lesser velocity comparing to innermost orbital electrons. Innermost orbital electrons n decreases, v increases. जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर चले जाओगे, so as n increases, velocity decreases. Outermost orbital electrons are having lesser velocity than innermost orbital electrons. Now this is our concept. समझ में आ गया? Vn is inversely proportional to n. As n increases, the velocity of the electron in the respect to orbit decreases. Hence, the outermost orbital electrons are having lesser speed comparing to the
innermost orbital electrons. Is it clear? Hint आपको मालूम हो गया? What is that hint? To have the expression for the velocity of an electron. Hint, Bohr's quantization rule divided by balancing condition. बस Bohr's quantization rule divided by balancing condition, we get what? The velocity of the electron in the respective orbit. If I consider the hydrogen atom for first orbit, सही है? देख लो, clear है? Yes. For hydrogen atom, for hydrogen atom, for hydrogen atom, for hydrogen atom Z equals to 1, and for first orbit N equals to 1. So V1 equals to Z1 into E square divided by 2 N equals to 1 H epsilon naught. This is nothing but E square divided by 2 epsilon naught H. By substituting the value of E, epsilon naught and H, all these are constant factors. By substituting the values of E, epsilon naught and H, we get V1 equals to 2.18 into 10 to the power of 6 meter per second. Now this is called first orbital velocity for hydrogen atom. 2.18 into 10 to the power of 6 meter per second. वही इक्वेशन है, जो इक्वेशन है वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, सो आई गेट द इक्वेशन फॉर व्हाट? वेलोसिटी. Right? It is also given by V1 equals to C divided by 137, where C equals to 3 into 10 to the power of 8 meter per second, velocity of the light. We can consider the velocity of the photon also, 3 into 10 to the power of 8 meter per second. अब इसको divide कर लिए, we can get, that is 2.18 into 10 to the power of 6 meter per second. V1 equals to C divided by 137. ऐसा भी लिख सकते हैं आप. काइट ऑफ बोलो, डेरिवेशंस कुछ भी नहीं है, आपको दो डेरिवेशन जमा नहीं कर सकते. फॉर nth ऑर्बिटल रेडियस, स्क्वायर ऑफ द बोर्स क्वांटाइजेशन रूल डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग कंडीशन. फॉर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द रेस्पेक्टिव ऑर्बिट, बोर्स क्वांटाइजेशन रूल डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग कंडीशन. राइट? इज इट क्लियर? Shall I go for the next? The most important derivation, that is nothing but expression for energy of the electron in the respective orbit. एक बार पूरा glance करो, एक बार देख लो, then I go for next important derivation. एक बार देख लो पूरा. पूरा ग्लांस करो, पूरे कॉन्स्टेंट सब्स्टिट्यूट कर दिए, और कुछ नहीं वहाँ पे. निकाल दूँ? Then last, that is nothing but the most important derivation. Expression for total energy of the electron. Expression for total energy of the electron, in the respective orbit. Expression for total energy of the electron in the respective orbit.
वी गेट द जनरल इक्वेशन. आप जनरल इक्वेशन से आराम से कर सकते हैं. फर्स्ट ऑर्बिटल एनर्जी कितना है, सेकंड ऑर्बिटल सेम फिगर. देन यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन डिफर कर दो. कंसिडर एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z where the charge on the nucleus is plus Zd and minus is the charge of the electron which is revolving around the nucleus having a radius r with a velocity v. Then यहाँ पे दो पार्टिकल, एक पॉजिटिव पार्टिकल और एक नेगेटिव है. सेपरेशन डिस्टेंस r. बीइंगनेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट. जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर ही है तभी घूमेगा. अनलेस अनटिल टू बीइंग इन द ऑर्बिट इट नेवर मूव्स विथ अ वेलोसिटी v. जस्ट बाय बीइंगनेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट देन it moves with a velocity v. That beingness of the electron in the orbit is nothing but potential energy. By moving with a velocity v is nothing but kinetic energy. Hence, it possesses both the kinds of the energy. One is potential energy, another one is kinetic energy. Right? So, the total energy E equals to, due to, that is beingness of the electron in the orbit, that is nothing but due to its position potential energy. Because of the rotation around the nucleus with a velocity v, it possesses what? Kinetic energy. The total energy equals to sum of the potential energy and kinetic energy. Then first one, potential energy is equals to, so it is in the region of what? Electrostatic field. The energy possessed by the electron in the region of electrostatic field, that is nothing but the potential energy equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught product of the charge divided by distance. Potential energy is a scalar quantity. We must consider the nature of the charge. What is the nature of the charge here on the nucleus? Plus. What is the nature of the charge of the electron? Minus. So it is a scalar quantity. We must consider the nature of the charge. The potential energy due to a system of two charges. वही कंसेप्ट ले सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. 1 divided by 4 pi epsilon naught product of the charges divided by distance. Because of the scalar quantity, we must consider nature of the charge. Minus. So, shall I write 1 divided by 4 pi epsilon naught minus sign इधर रख दूँ मैं, Zd square divided by r. I call equation number 1. सही है. Second one, kinetic energy. So half m square. The electron possesses the mass m and moving with the velocity v. So I need m square. अब जो कुछ भी इक्वेशन चाहिए आप लोगों को, वी आर स्टडिंग द बोर्स एटॉमिक मॉडल. बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो पॉस्टुलेट है वही कंसेप्ट को ले लो आप, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. m स्क्वायर होना है हम लोगों को. सो व्हाट इज दैट कंसेप्ट? एंगुलर मोमेंटम. बट okay, to keep the electron in the orbit we need what? Necessary balancing condition. So force due to centripetal force is nothing but balanced by electrostatic force, which implies m square by r. Balancing condition 1 divided by 4 pi epsilon naught Zd into E divided by r square. So electrostatic force, that is nothing but vector quantity. नेगेटिव रहे तो भी क्या रहते हैं यहाँ पे? पॉजिटिव. मेरे को क्या होना है? m स्क्वायर होना है. सो m स्क्वायर is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught Zd square divided, एक r कैंसिल हुआ, r यहाँ पे डाल सकता हूँ मैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं. यहाँ पे आपको मालूम हो जाता है. टू कीप द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट वी नीड द नेसेसरी बैलेंसिंग कंडीशन, दैट इज m स्क्वायर बाय r. सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. खाली इक्वेशन फिगर को कॉन्सेंट्रेट करो, यू कैन गेट एवरीथिंग. हम नीट पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे जो थ्योरी है दैट इज योर व्हाट? द मिल्क. योर नीट एंड सीट इज़ नथिंग बट द क्रीम. कितने बार बोले सो? लास्ट बार भी बोले सो. अब जितना थ्योरी अच्छी तरह से समझ लोगे उतना अच्छा आप लोगों को व्हाट वहाँ पे कंप्यूटर एग्जाम्स को इजीली आप कैचअप कर सकते हैं. शैल आई सब्स्टिट्यूट m स्क्वायर का यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ, व्हाट इज दैट m स्क्वायर? 1 divided by 4 pi epsilon naught
z square divided by r. So this is my equation number 2. मैं ऊपर substitute, hence therefore total energy E equals to potential energy plus kinetic energy minus 1 divided by 4 pi epsilon naught z square by r plus 1 by 2 1 divided by 4 pi epsilon naught z square by r. कॉमन क्या आता देखो, सो E equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught z square by r. बचा क्या, -1 plus half. -1 plus half is nothing but minus half. So 1 divided by 4 pi epsilon naught z square by r into minus half. -1 plus half, minus half. And what is your final equation? So finally I can write, shall I write here nth orbital energy. लिख सकते हो बाद में, z minus z square divided by 8 pi epsilon naught into r. एक बार पूरा इक्वेशन ग्लांस करो. Then I go for nth orbital energy. सही है. एक बार ग्लांस करो ठीक तरह से. निकाल देता हूँ मैं ये फिगर को, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको. E इक्वल्स टू देयरफॉर E इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r. फॉर nth ऑर्बिट, for nth orbit E equals to Enth and R equals to Rnth. We know that nth orbital radius hint this way, नाही माझं पाय, नाही E माझे पाय n स्क्वायर s स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. देखो हिंट काम को आ गया. अगर nth ऑर्बिटल रेडियस आपको मालूम नहीं है, आपका डेरिवेशन चलेगा, यू डोंट गेट द कंप्लीट मार्क्स. यहाँ पे रुक गए गाड़ी. आप आर इक्वल्स आर एन सब्स्टिट्यूट करें, ई एन इक्वल्स टू माइनस z स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन करें. व्हाट इज द वैल्यू फॉर आर एन, नाही माँ से पाई. हिंट आपको काम को आ गया. देन आई सब्स्टिट्यूट हियर nth ऑर्बिटल एनर्जी माइनस z स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आर एनथ, माइनस z स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज आर एनथ, n square s square epsilon naught divided by mz square pi. पाई पाई कैंसिल हो जाते हैं. सो nth ऑर्बिटल एनर्जी माइनस z स्क्वायर ऊपर चलेगा, m कैंसिल हो जाते, नहीं हो जाते. सो m पाई कैंसिल हुए, सो mz स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या 8 n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. सो आप इसको लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस एम झेड स्क्वायर ई फोर्थ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर. दिस इज योर इक्वेशन. यहाँ पे भी हिंट दे दो तो यही हिंट आप लोगों को वेव नंबर को नेक्स्ट डेरिवेशन को काम आ जाता. एक बार पूरा देख लो और एक बार डेरिवेशन कर तो मैं, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट. और एक बार नीटली अंडरस्टैंड कर लो, नीटली डेरिवेशन कर तो मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है. बोर्ड को अब अच्छी तरह से यूज कर लेंगे. एक बार देख लो, पूरे इक्वेशन ग्लांस कर लो. राइट
सही है? शैल आई गो फॉर वंस अगेन? राइट. अब यहाँ पे यूज करता हूँ मैं एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द रेस्पेक्ट टू ऑर्बिट. राइट, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को पूरा हिंट दे दिए सर. अब हिंट को यहाँ पे यूज कर लेंगे. nth ऑर्बिटल, अगर आप वो इक्वेशन सब्स्टिट्यूट नहीं कर दे, आपका इक्वेशन आधा अधूरा रह जाता है. कितनी चीज बाहर करेंगे आप लोग? राइट. सो आई गो फॉर द फिगर डाल दो. नाउ दिस इज द एटम, न्यूक्लियस, charge on the nucleus plus Z e. The electron, charge on the electron is minus e, moving with a velocity v, radius r. छोटा फिगर डालें उसे. एक 4 सेंटेंस लिखते हैं. Consider an atom of atomic number Z having the nucleus of charge plus Z e and minus e is the charge of the electron moving in an orbit of radius r with a velocity v. Beingness of the electron in the orbit, it possesses the potential energy. Due to its motion around the nucleus, it possesses what? Kinetic energy. Therefore, total energy is equal to sum of the potential energy and kinetic energy. That total energy E equals to potential energy and kinetic energy. Number 1, potential energy. So potential energy 1 divided by 4 pi epsilon naught, product of the charges divided by distance. The nature of the charge should be considered, that is nothing but minus c, because it is a scalar quantity. Potential due to system of 2 charges, Z e into E, minus c divided by distance r. Then this is nothing but minus 1 divided by 4 pi epsilon naught, Z e square by r, equation number 1. Original equation, confuse मत कर लो. Right? Second one, kinetic energy, we know that half m e square, but m e square by r, centripetal force, is balanced by electrostatic force to keep the electron in the orbit. Z e into E divided by r square. सही है? एक आर कैंसिल होता, एम ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. एक आर कैंसिल हो गया, वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स 1/2, एम ई स्क्वायर इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जेड ई स्क्वायर बाय आर. सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2. Therefore, total energy, that is nothing but E equals to potential energy plus kinetic energy. What is that potential energy? Minus 1 divided by 4 pi epsilon naught, Z e square by r plus kinetic energy. इसको एक बार लिख दूँ मैं, 1 divided by 4 pi epsilon naught, Z e square by r, 1/2 यहाँ पे लिख दो, आपको कॉमन लेने के लिए इजी हो जाता. So total energy E equals to, कॉमन लिए 1 divided by 4 pi epsilon naught, Z e square by r कॉमन लिए, बचा क्या? -1 plus half. So total energy E equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught, Z e square divided by r into -half. This is nothing but total energy equals to, shall I write? Z e square minus 4 into 2, 8 pi epsilon naught into r. Right? When I consider for nth orbit, put E equals to Enth and R equals to Rnth. Enth equals to minus Z e square divided by 8 pi epsilon naught into Rnth. यहाँ तक आप लोगों का गाड़ी आराम से चलता. यहाँ पे क्या दिक्कत हो जाती? सब्स्टिट्यूट
the value of rnth, but rnth equals to नाही माझा पाय n square s square a epsilon naught. सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हिंट दिया सो nth ऑर्बिटल एनर्जी माइनस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m z स्क्वायर पाई. अब इसको सॉल्व कर दो अच्छी तरह से, एक पाई कैंसिल कर देता हूँ मैं यहाँ पे, राइट. सो माइनस z स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चल जाता है m z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. एक सेंटेंस एक लाइन बढ़ने दो, माइनस m z इंटू z स्क्वायर e स्क्वायर इंटू स्क्वायर e फोर्थ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर. This is your equation. This is nth orbital energy of the electron, right? अब यहाँ पर नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है? The negative sign indicates that the electron is strongly bonded to the nucleus. That negative sign indicates that there is a force of attraction between the nucleus and the electron. The electron is strongly bonded to the nucleus. अब यहाँ पे दोनों कंपेयर कर दिए. What is the relation between En and n square? As n increases, the corresponding orbital energy decreases. But because of the negative sign, it increases. Decrease of decrease, that is nothing but minus of minus plus बोले जैसा, खाली आप नेगेटिव छोड़ दिए. nth is inversely proportional to n square. As n increases, nth decreases. Because of the negative sign, it increases. Hence, the energy of the outermost orbit, the total energy of the outermost orbital, the total energy of the electron in the outermost orbit is more than the innermost. So खाली नेगेटिव साइन नहीं रहता था. As n increases, e decreases. Because of the negative sign, as the n increases, e also increases. Hence, outermost orbital energy is more than innermost orbital. एक बार पूरा इक्वेशन ग्लांस करो, then I go the conclusion. एक बार पूरा देख लो इक्वेशन. राइट, कुछ भी नहीं है. potential energy concept, kinetic energy concept, potential energy due to system of two charges. Electrostatics concept plays है 1 divided by 4 pi epsilon naught, product of the charges divided by distance. It is a scalar quantity. We must consider the nature of the charge. Electron is negative, minus sign. Then kinetic energy to keep the electron in the orbit. What is the necessary condition? Balancing condition. Centripetal force is balanced by electrostatics force concept. Substitute करो. Then you substitute for nth orbital energy. E equals to Enth and R equals to Rnth. अगर Rnth सब्स्टिट्यूट नहीं करे इतना इक्वेशन आप लोगों को फुल मार्क्स नहीं मिलता. आप लोगों को हिंट दिया सो है ना ही माजे पाई. राइट, सब्स्टिट्यूट हियर, डू द नेसेसरी कैंसिलेशन, देन योर फाइनल इक्वेशन m z square e fourth 8 epsilon naught n square s square. So from the equation, negative sign indicates that the electron is strongly bonded to the nucleus. There is a bondage between the electron and nucleus that indicates force of attraction. From the equation, as the n increases, e decreases if there is a no negative sign. Because of the negative sign, as n increases, e also increases. The electrons in the outermost orbit possesses more energy than the electrons in the innermost orbit. So this is nothing but your basic concept. अब यही इक्वेशन को नेक्स्ट क्लास में एनालाइज करके देन वी गो फॉर लास्ट डेरिवेशन ऑफ द टॉपिक, दैट इज वेव नंबर. देख लो, सिंपल छोटा फिगर डाले सो अंडरस्टैंडिंग के लिए. एक बार पूरा इक्वेशन ग्लांस कर लो.
राइट. नेगेटिव साइन किस लिए आया इसको मालूम हो गया. देयर इज ए बॉन्डेज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. हर एक फिगर को एक 4 सेंटेंस लिखो, बगैर सेंटेंस से डेरिवेशन को मत जाओ. सेंटेंस बाहर करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट फिगर देखो, योर ओन सेंटेंस क्रिएट को. जस्ट यू हैव टू बी क्रिएट योर ओन सेंटेंस. डोंट बाय हार्ट द थिंग्स. You have got the little bit knowledge regarding the construction of the sentence. You make it the sentence of your own. Then you feel that you are cool-minded. There will be no need of by hearting the derivations. Natural way पे derivation कर लो. Is it clear? Shall I continue with the next class? Yes. Thank you.